Good morning, Vestigians. Welcome to this session. My name is Ajay Kochar, Brand Manager Healthcare in Vestige. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल के ऊपर। वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल जो कि कुछ सालों पहले हमने लॉन्च किया था इंडिया के अंदर, एंड टुडे वेस्टीज इज द नंबर 1 कंपनी इन क्रिल ऑयल कैटेगरी इन इंडिया। क्रिल ऑयल कैटेगरी के अंदर वेस्टीज नंबर 1 कंपनी है। क्रिल ऑयल जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। आज हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो कि क्रिल ऑयल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ लेटेस्ट स्टडीज क्रिल ऑयल के ऊपर हुई हैं, उसके बारे में वो हमारे साथ कुछ बातें करेंगे। सो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अतुल बर्मन। मिस्टर अतुल बर्मन इज द डायरेक्टर ऑफ अकर बायोमरीन। अकर बायोमरीन एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि क्रिल ऑयल का प्रोडक्शन करती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिल ऑयल का प्रोडक्शन अकर बायोमरीन ही करती है। अतुल हैज अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 32 इयर्स इन मार्केटिंग। वो दोनों B2B B2C सेल्स के अंदर रहे हैं, एंड आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिल ऑयल, जो नॉलेज उनके पास है क्रिल ऑयल के ऊपर, वो बहुत सालों से क्रिल ऑयल के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज पढ़ चुके हैं क्रिल ऑयल को लेकर के। ही विल बी शेयरिंग ऑल हिज इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिल ऑयल विद अस। Atul, welcome to this session, and now the session is all yours. Hello everybody, and thank you Ajay for your very kind and generous introduction. As some of you may know, Aker Biomarine is a Norwegian biotech innovator. Our vision is to improve human and planetary health. We are present in India, and our association with Vestige has been a long one, nearly 5 years now, and hopefully a long way to go, as we share a common goal of improving human health. In India, we are with Vestige to address a very, very important and pertinent topic, और वो है cardiovascular condition का। Cardiovascular conditions, जैसा आप लोग सब लोग जानते होंगे कि एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में। As per WHO, 18 million people have died of cardiovascular condition. 85% of that is only because of heart attacks, basically. And the most recent and the most disturbing factor is that even the young population, which is in the range of 40 years to 60 years, nearly about 45% of this entire number is in that area also. और आप लोग देख ही रहे होंगे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि किस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, भले वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, किस तरीके से रोज़ और आपके फैमिलीज़ में या नोन लोगों में बढ़ता जा रहा है बेसिकली। So this is a very important health issue that we need to address, and we are together with Vestige to address this particular issue. Now to address this issue, जो कि एक बहुत important issue है, 3-4 चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो lifestyle changes होने चाहिए, wherein you have exercise, then you have to take care of your diet, which is very, very important, the nutrition part, and equally important is what you miss in your diet, you must take as supplementation, which is what is called as health supplements or dietary supplements. And one of the most important dietary supplements that you can take to prevent and to maintain the cardiovascular conditions, heart attack and such incidences is by taking krill oil. हम इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे कि किस तरीके से krill oil इस particular condition heart health में बहुत ज़्यादा beneficial है। So in Aker Biomarine we एक सोल्यूशन लेके आते हैं हम, और वो भी एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही प्रिस्टीन, बहुत ही क्लियर, अनक्लीन, साफ और सुंदर और बहुत ही शुद्ध जगह, जिसे एंटार्क्टिका कहते हैं। एंटार्क्टिका से हम क्रिल हार्वेस्ट करके लाते हैं और यहाँ पे बना के वेस्टीज के साथ में प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करते हैं। क्रिल ऑयल एक बहुत ही यूनिक, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है, इसलिए क्योंकि क्रिल ऑयल में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है जिसे हम सोचते हैं कि क्रिल ऑयल शायद सिर्फ ओमेगा 3 है। क्रिल ऑयल ओमेगा 3 से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिल ऑयल में ओमेगा 3 के अलावा फॉस्फोलिपिड्स, कोलाइन और एस्टाज़ैंथीन भी अवेलेबल है, और ये चारों न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो साथ में मिलके क्रिल ऑयल को एक पावरफुल इंग्रेडिएंट बनाते हैं, जो कि बिल्कुल सक्षम है हार्ट हेल्थ की कंडीशन को हैंडल करने के लिए। वो सक्षम इसलिए है क्योंकि क्रिल ऑयल ही ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जिसमें कि मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हैं। तभी आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 न्यूट्रिएंट,
एक तरफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्लस कोलाइन, दोनों अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, और इस तरीके से इसमें हार्ट हेल्थ में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने ज़रूरी है कि दोनों ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलाइन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के लिए। इसका ये मतलब होता है कि बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं बना सकती है, ये हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, और इसीलिए क्रिल ऑयल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बेनिफिट ऑफ हार्ट हेल्थ। एक और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्रिल ऑयल का, वो है फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड ही है जिसका एडवांटेज, वी कॉल इट फॉस्फोलिपिड एडवांटेज, जो कि क्रिल ऑयल को दूसरे किसी भी फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 से बहुत सुपीरियर और अलग बनाता है। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कोलाइन को बॉडी में बायो अवेलेबल एंड एब्जॉर्ब अच्छे से कराता है। वो ऐसे क्योंकि खुद फॉस्फोलिपिड वाटर सॉल्युबल है, सो वो बहुत आसानी से कोलाइन एंड ओमेगा 3 को बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्ट करता है स्टमक में, and then it takes it and makes sure that it is available in various different parts of the body, including the heart muscle basically. And because of this, you get a lot of benefit of krill oil in heart health. This is a short movie that you should see which will illustrate how phospholipid actually acts. Krill oil provides powerful phospholipids with omega-3s and choline, delivering whole body health benefits. Our body is composed of trillions of cells, each of which is protected by a membrane called the phospholipid bilayer that provides structure, enables nutrient uptake, energy production, and countless vital functions that form the basis for life. What really sets krill oil apart is that it is naturally rich in these phospholipids. Oil phospholipids ensure superior transport, delivery, and integration of omega-3s and choline directly into the cell's bilayer. This is the krill oil phospholipid advantage. This benefits every cell and organ in your body, including your heart, liver, muscles, and even your skin. Healthy cells, healthy body. जैसा कि आपने देखा कि ये फॉस्फोलिपिड एक बहुत ही कमाल का मॉलिक्यूल है जो कि बहुत आसानी से जो इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं क्रिल ऑयल में, उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। अब इसको टेस्ट करने के लिए आप खुद ही कर सकते हैं, जबकि आप 2 अलग अलग ग्लास लीजिए, उसमें 3/4 पानी भरिए, आप कोई भी और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स, मेरीन सोर्स में भी फिश ऑयल और समथिंग लाइक दैट, वो डालिए, और दूसरे ग्लास में अगर आप क्रिल ऑयल डालते हैं और उसको रिग्रेसली शेक करते हैं, तो आपको रफली ये पता चलेगा कि किस तरीके से फॉस्फोलिपिड इन क्रिल ऑयल मेक्स द होल इंग्रेडिएंट्स वेरी सॉल्युबल एंड thus very bioavailable in different parts of the body. Today, I am also very happy to present to you a new study on krill oil in heart health. ये स्टडी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी है, जो कि इसी साल पब्लिश हुई है जनवरी 2022 में। This study got published, in fact, in one of the most prestigious journals called Journal of American Medical Association, commonly called as JAMA. This study is very important, very path-breaking, not only because of the results जो कि इसके आए हैं, but also because of the size of the study that it was. So there were 520 patients, 164 different centers across America and Canada, and what is also more important is that it is a large study which costed around $40 million. 26-week study, long study, which clearly proves that there is a significant reduction of triglycerides when you use krill oil. इस स्टडी के बारे में और बताने के लिए I am happy to introduce our Director of R&D, Human Health and Nutrition, Dr. Katina. Hi, this is Katina Handeland, greeting you from the Aker BioMarine's headquarters in Oslo, Norway. I am the Research and Development Director for Human Nutrition here in Aker BioMarine. And I have a background where I have a master's degree and a PhD in human nutrition. I have spent several years researching into the
different health effects that humans may have from eating or consuming omega-3 fatty acids. And I have been working with the research and development of different omega-3 derived products for human health for the past 5 years. And now I'm very excited to share with you some recent results that we received from a study that was conducted in heart health patients. This study investigated the impact of supplementing the diet with either krill oil or a control or a placebo on the levels of triglycerides in the blood. But what are triglycerides? Triglycerides are mainly just fats that circulate in our blood. And too high levels of these fats have been found to increase a person's risk of developing a cardiovascular disease event quite dramatically. There are several mechanisms behind this effect, but the main mechanism is that the triglycerides can lead to fatty deposits and plaque buildup inside the blood vessel walls, leading to blockages and perhaps also a blood clot or a heart attack. So if a person has higher than what's recommended levels of triglycerides in the blood, then this person is at increased risk of developing a cardiovascular disease. And in the recent study that I will talk about, they recruited patients which had severely high levels of these triglycerides in their blood at the beginning of the study. And they wanted to investigate the effects of supplementing with either krill oil or cornstarch, which was the control, daily for a total duration of 26 weeks. The study had approximately 500 participants and was thus one of the largest studies in this patient group performed to date with omega-3. And the results were quite interesting. They showed that krill oil gave a significant placebo-adjusted reduction of triglycerides of 10.9% after 12 weeks, which was the primary endpoint of this study. And this effect of krill oil was further increased to a 12.7% reduction after 26 weeks of supplementation. If only looking at the isolated effects of krill oil and not taking the placebo group into account, then krill oil gave a 26% reduction in triglyceride levels after 12 weeks and a 33.5% reduction after 26 weeks. This was one of the longest lasting and also one of the largest omega-3 clinical trials performed to date in this patient group. And the results are very interesting and can also be regarded as clinically relevant for this patient group when interpreting the results and the effects that they may have on reducing a person's risk of developing a cardiovascular disease event. Thank you for your time. So, as Dr. Katina explained, this very important study, the final outcome of this says that krill oil reduces triglycerides by 33%, and that too without increasing the bad cholesterol LDL, and raises the level of omega-3 index just in 30 days. Now, looking at those people who were taking medication for high triglycerides levels at the time of study, मतलब इस स्टडी का जो सबसेट है, out of 520 people who were in the study, about 254 people, they were on the medication, on other medications like statins basically. So when you see the effect
of krill oil in this people who were taking other medication, the effect is even more stronger. And it is stronger by 19.5% when you see a 12-week period and 22.3% when you see a about 26-week period basically. What does this mean? This means that those taking medication could benefit even more with krill oil. Okay everybody, towards the end of this session, now मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किसको, क्यों और कितना krill oil लेना चाहिए जिससे कि हार्ट हेल्थ में बेनिफिट हो. सो सबसे पहले किसको? People who have high triglycerides, people who have heart disease, people who have heart disease and are taking other medications, and also people जो कि looking for maintaining heart health, उन सबको वेस्टीज krill oil लेना चाहिए. क्या फ़ायदा होगा वेस्टीज krill oil का? वेस्टीज krill oil हेल्प करता है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को रेज करने के लिए, विच इज़ द HDL कोलेस्ट्रॉल. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट blood clots that can cause stroke, heart attacks. Vestige krill oil helps in reducing the risk of overall coronary artery disease basically. कितना लेना चाहिए? Dose of Vestige Prime krill oil for cardiovascular conditions is about 1 gram to 1.5 grams per day, जिसका मतलब 2 से 3 कैप्सूल्स per day लेनी चाहिए. Ideally, it should be taken for 4 to 6 weeks minimum, जिससे कि वेस्टीज प्राइम krill oil के बेनिफिट्स बहुत क्लियरली विजिबल होंगे. थैंक यू. दैट इज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडे. ओवर टू यू अजय. Thank you so much Atul and Dr. Katina for sharing this wonderful information with us today. I'm sure हमारे जितने भी viewers हैं उनको इस लेटेस्ट स्टडी के बाद krill oil के ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा. इस स्टडी के अंदर हमने जैसा देखा कि कैसे krill oil जो है वो ओमेगा 3 इंडेक्स को बढ़ाने में मदद करता है और कैसे उन लोगों को जो ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से जूझ रहे हैं कैसे krill oil उसको मदद कर रहा है. krill oil का हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट है. ये आपका गुड फैट जो है, ओमेगा 3 जो गुड फैट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, उसको बढ़ाने में मदद करता है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है एंड आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से दूर रखता है. तो जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस ऑलरेडी हैं उनको बेटर मैनेज करने में मदद करेगा और जो लोग प्रोन है टुवर्ड्स कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस उसको प्रिवेंट करने में मदद करेगा. तो आज से ही अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हैं तो वेस्टीज प्राइम krill oil का कंजम्पशन स्टार्ट करें एंड अपने हार्ट को हेल्दी रखें. Vestige Prime krill oil is freely available for billing at all our branches, DLCP, mini DLCP and even online. आप आज से ही इसको परचेज कर सकते हैं एंड इसका कंजम्पशन स्टार्ट कर सकते हैं. हमें उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी ये जो नई स्टडी है वेस्टीज प्राइम krill oil के ऊपर इसको जान सकें. थैंक यू सो मच. विश यू वेल.